Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to show you how to make chickpea chaat, and it will just take 5 to 10 minutes only. First thing is wash and soak chickpea in lot of water for at least 6 to 8 hours. Now it is ready, so add them to the cooker and pour water so that it cover up. Now add salt according to your taste, and then add turmeric powder half tablespoon and mix it, and then add one onion. Now add tomato. मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर यूज़ किया है. And then add coriander powder, red chili powder also, and now mix it well and then cover the lid. 2 सीटी से ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे. आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब कुक हो चुका है. अब मैं इसे मैश कर लूँगी. आप इसे मैश कर ले, उसके बाद ये रेडी है. नाउ इट्स सर्विंग टाइम. मैं यहाँ पे आलू का टिक्का ऐड कर रही हूँ. And then garnish with onion, green chili, जीरा पाउडर, salt, कर्ड, इमली की चटनी एंड इवन सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं. And it's done. So guys, that's it for this video. Please like, share and subscribe to my channel, and also hit the notification button for further updates. So until then, bye bye. See you in the next video.